Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2, question number 2, first part. Here are three different things has been asked in this question. First one is find the inverse of the function. Second one, find value of inverse at -1. And third one is find the composition of f inverse, fx and f into f inverse and verify that it is equal to x. To find the inverse of given function, as I told you in previous lecture, the function must be 1 to 1 and on to, that is bijective function. As in this question, it is clear that they have asked us to find the inverse of the function, so it is very much understood that the function is 1 to 1 and on to, means it is a bijective function, so their function exists. And what is the process to find the inverse of the function? The process is let f of x equal to y. So our function becomes y is equal to minus 2x plus 8. It is a similar way as we use in domain and range topic to convert the independent variable into dependent variable and dependent variable into independent variable. Little bit of working involved here. Minus 2x and 8 minus y. So x is equal to 8 minus y over 2. As f of x equal to y, so x is equal to f inverse y. So finally we get f inverse y is equal to 8 minus y by 2. Just replace y by x, 8 minus y by 2. So our inverse is f inverse x equal to 8 minus x by 2. 8 minus x by 2. Just convert the independent variable into dependent variable and dependent variable into independent variable in order to find the inverse of the function. Here is our first part, the inverse of the function, 8 minus x by 2. It is our first part. And what is the second part? To find f inverse minus 1. B part, f inverse, value of the inverse function at -1. So 8 minus -1 over 2, the value will be 9 by 2. The third is composition of function. What is? We have to show that f inverse fx and f of x, f inverse x is equal to x. That if we compose or combine inverse or substitute f of x into inverse or inverse into f of x, the result will be x. One by one we verify this thing. Now here we verify f inverse f of x and f into f inverse x is equal to x. So first we find f inverse into f of x. What we have to do, just put the value of function f of x in inverse function. We have f of x minus 2x plus 8. Just put this value in inverse function in place of x, this x. So if we put this value in inverse function, we get 8 minus 2x plus 8 over 2. For this, यानी इधर हम माइनस 2x प्लस 8 को पुट करेंगे इस x की जगह पे, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 8 प्लस 2x minus 8 over 2, 8 cancel, the answer will be x. Now if we put inverse function in f of x, that means 8 minus x by 2 को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में, f of x में. Here is our f of x minus 2x plus 8. इधर आपने इसको 8 माइनस एक्स को इस x की जगह क्या कर देना है, सब्स्टिट्यूट करना है. तो माइनस 2, 8 माइनस एक्स ओवर 2 प्लस 8, 2 कैंसिल बाय 2, माइनस 8 प्लस एक्स प्लस 8, 8 cancel, the answer is x. Now it is verified that f inverse f of x is equal to f inverse f into f inverse is equal to x. ये आपका वेरीफाई हो गया.
क्वेश्चन 2 पार्ट 4 सिमिलरली आपने ये तीन चीज़ें इसमें फाइंड करनी है. नंबर 1 इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन, नंबर 2 फॉर वैल्यू ऑफ इन्वर्स फंक्शन फॉर -1 और लास्टली आपने वेरीफाई करना है कि एफ इन्वर्स एफ ऑफ एक्स एंड एफ इंटू एफ इन्वर्स एक्स रिजल्ट शुड बी एक्स. तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे इन्वर्स ऑफ दिस फंक्शन. सो एफ ऑफ एक्स is equal to 2x plus 1 over x minus 1. Let f of x equal to y, then that function becomes y is equal to 2x plus 1 over x minus 1. Now we convert this function in terms of y. So cross multiply xy minus y is equal to 2x plus 1, xy minus 2x 1 plus y, x common y minus 2 1 plus y. Finally the result is y plus 1 over y minus 2. So as f of x equal to y, f of x equal to y, so x is equal to f inverse y, or we have the value of x, we put here value of x, so f inverse y is equal to y plus 1 over y minus 2. Just replace y by x. F inverse x is equal to x plus 1 x minus 2. That is our inverse function. Now we have to find the value of -1, value of f inverse at -1. So our inverse function is x plus 1 over x minus 2. So f inverse -1 will be -1 plus 1 over -1 minus 2, 0. The value of inverse function at -1 is 0. Now we verify third part, C part, that is f inverse f of x. f inverse f of x यानी ओरिजिनल फंक्शन जो हमारे पास था, ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू हमारे पास थी इस क्वेश्चन में 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसमें, इन्वर्स फंक्शन में. हेयर इज़ अवर इन्वर्स फंक्शन. सो x न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों जगह पे हम x को रिप्लेस करेंगे किससे, 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1 से. द रिजल्ट विल बी 2x plus 1 over x minus 1 plus 1 over 2x plus 1 over x minus 1 minus 2. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे algebraically तो फाइनली यू कैन सी द रिजल्ट विल बी x. इन सिमिलर वे अगर हम सब्स्टिट्यूट करें या कंपोजिशन फंक्शन फाइंड करें f का f इन्वर्स के साथ, तो उसके लिए हम फंक्शन में पुट करेंगे इन्वर्स की वैल्यू जो कि है x प्लस 1 ओवर x माइनस 2. इस वैल्यू को आप किस में पुट करोगे, फंक्शन में. तो फंक्शन हमारा क्या है, फंक्शन हमारा है 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. फंक्शन आपको गिवन था 2x प्लस 1 ओवर x माइनस 1. तो इस फंक्शन के इसमें आप ये इन्वर्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे x और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पे. तो 2x प्लस 1 over x minus 2 plus 1 divided by 2x x plus 1 over x minus 1 x minus 2 minus 1. और जब आप इस रिज़ल्ट को फाइनली सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द आंसर x. इस तरह से थर्ड पार्ट को आप वेरीफाई कर सकते हो कि अगर इन्वर्स को फंक्शन के साथ कंपोज करें या फंक्शन को इन्वर्स के साथ, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा क्या आता है, द रिजल्ट विल बी योर वेरिएबल x. इन सिमिलर वे यू कैन अटेम्प्ट other parts of exercise 1.2 question 2. If you have any problem, please mention in comment box or WhatsApp me at my number and I will try to answer your problem. Thank you.